stories. Eknath Shinde seems to have succeeded in pulling off an audacious coup against the mighty Thackerays. Now, the latest video that has been released by Shinde's supporters show that the rebel camp has swelled to over 40 MLAs, which is above the much-needed mark to avoid the provisions of the anti-defection law. 4 more MLAs who have now reached Guwahati now. Shiv Sena leader Arvind Sawant has said a whip has also been issued to the MLAs saying that if they didn't obey and give prior notice, petition has now been submitted to the Maharashtra Deputy Speaker demanding disqualification of at least 12 of those MLAs. The plea states that the membership of Eknath Shinde, Balaji Kinekar, Lata Sunavne and Bharat Gugavle among the 12 others should be cancelled. Meanwhile, Eknath Shinde camp has hit back at the Uddhav camp saying that they cannot scare the real Shiv Sena. कल हमने पार्टी की मीटिंग बुलाई थी सभी विधायकों की। उस मीटिंग के पहले उसकी नोटिस जारी कर दी थी। उस नोटिस में हमने लिखा था कि आप इस मीटिंग को अगर नहीं आए तो आपके ऊपर संविधान के अनुसार कानूनन कार्रवाई होगी। अब वो नहीं आए, कुछ लोगों ने नोटिस के जवाब दिए, कुछ ने गलत सलत कारण बताए। वो कारण उसमें लिखा था कारण अगर प्रभावी नहीं होंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अब इसके लिए हमने उनके पिटीशन कर दिया आज माननीय उपाध्यक्ष जी को और कहा है कि इनकी सदस्यता रद्द की जाए। ये हमारी मांग है। 12 लोग हैं, आज 12 लोगों की नोटिस हमने जारी की। आणि त्यांची जी मागणी आहे ती मागणी अधिकृतपणे शिवसेना पक्षप्रमुखांसमोर त्यांनी मांडावी। त्यांच्या मागणीचा नक्की विचार होईल, पण आधी मुंबईत याची हिंमत दाखवा। पण आमची भूमिका फक्त सध्याच्या सरकारविषयी आहे। त्या सरकारमधून महाविकास आघाडीतून शिवसेना बाहेर पडायला तयार आहे। तुम्ही ते येण्याची हिंमत दाखवा, समोर उद्धव साहेबांसमोर या आणि भूमिका मांडा। नक्की तुमच्या भूमिकेचा विचार होईल। 24 तासात परत या। शिवसेना खुद ही एक सेना का अंदर का मामला है। एक ही इधर कांग्रेस हो एनसीपी हो, वो अपने अपने जगह पे है और मजबूती के साथ वो महाआघाड़ी को सपोर्ट कर रहे हैं। और जहाँ तक मुझे जो मालूमात मिले हैं, मैं अभी भी उनके साथ बातचीत भी किया, तो महाआघाड़ी की सरकार ये टिकेगी। हमारा ये कहना है कि महाविकास आघाड़ी के साथ हम हैं और हम रहेंगे। अगर उनको किसी के साथ अलायंस करना है तो उसमें हमारी कोई जोर जबरदस्ती नहीं। Well, in a breaking update, Aditya Thackeray came out to speak to the media, and he has been speaking to Times Now as well off camera, where he has gone on to say that the Chief Minister's health is better, he is recovering, but it is difficult to maintain distance because he is also suffering from COVID-19 at this point. Straight away going across to Shivani right now. Shivani, good morning. What did Aditya Thackeray say about the ongoing crisis? Well, good morning to you. Clearly indicating that 2-3 next days will be crucial and very much important. That's what he has indicated. He also asking about CM Thackeray. He said that he is recovering, but it is quite difficult to maintain distance with father in the same house at such political developmental time. But simultaneously asking about whether they are directly communicating with Eknath Shinde and the other rebel MLAs, then he nodded and said yes, but it is not the right time to speak about those particular conversations. So clearly confirming that they are in touch with rebel MLAs and also trying to reach out Eknath Shinde. But of course, the way later he said that I'm grateful that the media is still covering, and at midnight also they are being there outside our residence. Shows their support, but we just wish that you don't have to stand for after 2-3 days of time. So clearly we understand that one thing that they are directly communicating with some of the MLAs and also trying in connection with Eknath Shinde as well. And of course, next 2-3 days are going to be very important as some big development will definitely come. In fact, Uddhav Thackeray himself, along with other top leaders of not only Shiv Sena but also of NCP and Congress, are getting suggestions and are planning as to how to just bring back the people in Guwahati. That is what in fact Sharad Pawar also mentioned, to which confirming Aditya Thackeray says that next 2-3 days are going to bring back some changes in the politics of Maharashtra and with respect to Shiv Sena especially. Right, but Shivani, Aditya Thackeray is also an MLA. So when it comes to backing the Shinde camp, will he be ready to do it? Because the whip had already been issued there. We are looking at two sides issuing the whip. As far as the Uddhav Thackeray Shiv Sena is concerned, they are seeking disqualification of at least 12 of those legislators.
Definitely, that is, I will see that it is just going to be Party A Shinde and Party B Thackeray as of now, because late in the night, at around 10:30 p.m. yesterday, the letters were submitted in Vidhan Bhavan, and those had names of 12 MLAs, those who did not join the meeting that was called by Aditya Thackeray, CM in fact. So we understand that Aditya Thackeray somewhere is also trying to communicate with those MLAs to get back them, and is not at all going to support the kind of planning or the kind of conversation those are coming out from Eknath Shinde, because right after that a letter being issued, the list being issued of 12 MLAs, Eknath Shinde also tweeted and said that even he knows the law and he's not going to get scared of any such action, and he himself said that on the tweet that he wants action and inquiry to take place against Shiv Sainik, that is Uddhav Thackeray, who never had that majority number of seats and still was able to make it to the Chief Minister chair. So definitely, when Shinde is attacking the chair of Chief Minister, father of Aditya Thackeray, then definitely Aditya is not going to back that being MLA. He is going to support his father and Thackeray family, because as of now, Shiv Sena's party supremo still remains Uddhav Thackeray. Right. And the claims those are coming from Shinde clearly is going to dispute the party, not only on the MLA ground, but also on the political ground. All right, Shivani, for the moment, thanks very much for staying with us. So Aditya Thackeray saying that the coming 2 to 3 days remains to be extremely crucial. They are also saying that they are in touch with the rebel MLAs in Assam. Let's get you another round of breaking update, because poster war continues. Even in Raigad, by posters that have been witnessed in Thane in support of Eknath Shinde. Eknath Shinde's residence is right there in Thane. And there are posters that have now come up which are lauding his work and calling Eknath Shinde as the real leader of the Shiv Sena. So there have been posters that have been put up across the state. We are looking at Radhika, who is joining us live at this morning. Good morning to you, Radhika. Different locations, we are told, across Maharashtra, posters in support of Eknath Shinde can be seen. Absolutely. Several posters that have come up across the state of Maharashtra, Thane, Raigad and several districts. In fact, these posters are celebrating Eknath Shinde. They are welcoming Eknath Shinde as their ultimate leader. You can see in those posters, there are photographs of Eknath Shinde along with Balasaheb Thackeray, in a sense indicating that they'd like Eknath Shinde to be the real Sena. They want to see him as the real Sena, and his identity as the Sena identity is being mixed here. So therefore, that celebration is going on, welcoming is going on, people welcoming him with open arms, especially several district leaders. Now, it comes at a time when, as Shivani had been pointing out, Thackeray has called for a meeting of district representatives of Shiv Sena. Now, remains to be seen at 12 noon today how many of these representatives are going to turn up, because several representatives have accepted Shinde as their leader, which is why so many of these posters have been put up across districts. So this meeting is going to be crucial to find out the support that Uddhav Thackeray will have, not just of the MLAs, but also of office bearers and district representatives and so on and so forth. All right, but if we are looking at the current situation, it is even Eknath Shinde, Radhika, in a tweet that he had been putting out saying that do not try to scare us away, because we are the real Shiv Sena, we are the real Shiv Sainiks who follow the legacy and will continue with the legacy of Balasaheb Thackeray. So he has been tweeting as well, talking about that he has more people. If we talk about the Uddhav Thackeray Shiv Sena, because they are barely left with more of those MLAs. Let's get you another round of breaking update on this, because what is being said now, the 3 more Shiv Sena MLAs and 5 other independent MLAs are all set to join the Shinde camp soon in Guwahati, because it is more than 40 of them. Yesterday, a show of strength that was done, Radhika. It is now being said that the number is only going to increase, and it is now being said that 3 more Shiv Sainiks, 5 other independents, that is well above the mark of 40 that Eknath Shinde currently has. Absolutely, well above the mark of 40.
3 more Sena MLAs, 5 independents are likely to join Shinde group. So every day we are seeing, the MLAs really straying away from Uddhav camp, breaking away from Uddhav camp and going for the Shinde camp. So yes, the numbers are only dwindling as far as Uddhav Thackeray is concerned, but swelling up at Eknath Shinde's side. Yesterday, of course, last night there were 2 Sena MLAs who had joined, who had finally reached Guwahati to get into the Shinde camp, and now we are hearing that 3 more Sena MLAs are going to be joining Shinde camp. So Shinde camp clearly getting stronger. That's one of the reasons why Shinde wrote that tweet stating that you're expelling us, but you're not the real Sena. We have the numbers on our side. You cannot expel us. We have the right for the appointment of the whip, for the appointment of the leader of the legislature, because we have the numbers. He clearly indicating that, Uddhav Thackeray at this time without numbers do not. All right, I believe Nana Patole is speaking right now. Let's cross live. देखो, हमारी एकदम क्लियर है स्ट्रैटेजी कि शिवसेना के अंतर्गत का ये मामला है, और जब शिवसेना के अंतर्गत का मामला है, जब मुख्यमंत्री जी ने वर्षा बंगला छोड़ के चले गए हैं, तो हमारी भूमिका स्पष्ट थी, क्योंकि हम तो सत्ता में शामिल होने का नहीं, हमें जो मैंडेट मिला था अपोजिशन में रहने का मिला था। लेकिन अंधेरे की सरकार जब गिरी, और अंधेरे की सरकार गिरने के बाद जी हो या शरद पवार जी हो, हमारे नेता सोनिया जी से मिली, और मिलने के बाद एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर महाराष्ट्र में ये सत्ता स्थापित हुई, और उसके साथ इस महाविकास आघाड़ी सरकार में हम लोग शामिल हुए। तो जो उनके पार्टी अंतर्गत जो सत्ता संघर्ष शुरू हो गया है, उसमें हम महाविकास आघाड़ी के साथ है। अगर मुख्यमंत्री जी को नहीं रहना है और दूसरे किसी उनके पार्टी के किसी को बनाना है, तो उनकी सोच है, और हम महाविकास आघाड़ी, हम बीजेपी को सत्ता से रोकने के लिए हम उनके साथ हैं। हमें बहुत सत्ता का लालच है, ऐसा कोई भूमिका नहीं। एनसीपी की तरफ से बयान आया कि ये अब 2.5 साल के बाद इस तरह से क्यों इन्होंने, एकनाथ शिंदे ने ये किया, और ये चीज़ें आगे जाके क्लियर होंगी, वक्त आने पे क्लियर होंगी, क्या कहना चाहते हैं? देखो, में क्लियर होने का कोई कारण नहीं, ये सब ईडी के वजह से ये खेल चल रहा है। अभी भी 2 मंत्री एनसीपी के जेल में हैं, एक शिवसेना का एक मंत्री रोज ईडी कार्यालय में बुलाया जा रहा है, और कई आपने देखा होगा कि प्रताप सर ने खुद मुख्यमंत्री को एक खत लिखा था, और उसमें ईडी का डर जो बताया था, उसके परिवार को क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं, और ये ईडी का डर बताकर फिर कर्नाटक की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, अरुणाचल की सरकार हो, ये सरकार को केंद्रीय यंत्रणा का दुरुपयोग कर केंद्र की बीजेपी सरकार जिस देश की लोकतंत्र को तहस-नहस कर रही है, ये बात सामने आती है। और ये जो मामले है कि आपस की लड़ाई, ये कुर्सी की लड़ाई नहीं है, ये ईडी के डर की लड़ाई है। और मुझे लगता है कि इस तरह के लोकतंत्र में इस तरह का सत्ता का दुरुपयोग जो बीजेपी कर रही है, ये बहुत घातक है। आज उनका है, कल किसी का होगा, ये समझ के चलना चाहिए। डेप्यूटी स्पीकर को भी लेटर दिया है एकनाथ शिंदे ने, वो कह रहे हैं कि हम डेप्यूटी स्पीकर के इसको चेक करेंगे, सिग्नेचर बाकी चीज़ें, क्या फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, क्या आपके हिसाब से? बिल्कुल होना चाहिए। फ्लोर टेस्ट के लिए क्या, लोकतंत्र में जब भी फ्लोर टेस्ट होता है, जिसका बहुमत हो उसकी सरकार होती है, कांग्रेस उसके लिए तैयार है। और ये जो डेप्यूटी स्पीकर की बात है, नहीं, डेप्यूटी स्पीकर की जवाबदारी है, वो कानूनन सब जांच कर उस आधार पर निर्णय लेना वो स्पीकर का अधिकार है। स्पीकर के अधिकार को कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। अब ये 2.5 साल के बाद की बात, क्योंकि शिवसेना कह रही थी कि हमें 2.5 साल का मुख्यमंत्री बनना है, बीजेपी और शिवसेना का इसी बात पे झगड़ा था, और अब एकनाथ शिंदे जी ये होता है, तो क्या आपको इसमें कुछ? देखो, मेरा एक कहना है कि जैसे एनसीपी और कांग्रेस हमारी ये नेचुरल अलायंस नहीं है, इस तरह का भी एक आरोप लगाया जा रहा है। तो हम इनको सवाल पूछना चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार में तुम थे 2014 से 19, तब कई मंत्री शिवसेना के जेब में रिजाइन लेके घूमते थे, तो क्या इसका मीनिंग लगाया जाए? ये सब चीज़ें जो है ये सिर्फ बकवास है। और हमारा ये कहना है कि महाविकास आघाड़ी के साथ हम हैं और हम रहेंगे। अगर उनको किसी के साथ अलायंस करना है तो उसमें हमारी कोई जोर जबरदस्ती नहीं।
अभी संजय राउत का बयान आया, वर्षा बंगलो पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सभी MLA जो उनके बचे हुए हैं उनको. Alright, Radhika, we are hearing from the Congress leader there, Nana Patole, who is still saying and maintaining that it is internal problem of the Shiv Sena, and come what may, they will stand with the Shiv Sena as of now, because we are still looking at a situation where many of those leaders continue to desert Uddhav Thackeray. But when it comes to Eknath Shinde, another round of exclusive breaking update, because we spoke to him once again, and he is giving out the numbers, the details. This is the only Channel Times now to speak to Eknath Shinde, and this has happened right after the disqualification threat was given by the Shiv Sena of Uddhav Thackeray. Remember the call that has now been taken to write a letter to the Deputy Speaker to disqualify 12 of those leaders. That includes Eknath Shinde as well. So Shinde speaking exclusively to Times Now, and he's saying we have over 40 plus Sena MLAs. Yesterday the number was around 37 to 38 Sena MLAs with around 5 to 6 independents. The number had already crossed 40, but today he is saying with more additions that are being made to the Eknath Shinde camps, now it is above the figure of 40 with only Shiv Sena MLA. Shiv Sena has currently 55 MLAs and above 40 of them are now with Eknath Shinde. Listen in. हेलो हाँ शिंदे साहब, गुड मॉर्निंग। प्रणेश बोल रहा हूँ टाइम्स नाउ से। बोलो। बस मेरे को ये जानना था, कल आपने भी चिट्ठी रिलीज किया, उसके बाद उन्होंने बोला कि हम छोड़ सकते हैं लेकिन आप बॉम्बे आके बात कीजिए। अगर आप तो कौन छोड़ सकते, किसने कहा है? संजय राउत ने बोला कि हम कांग्रेस और एनसीपी को छोड़ सकते हैं लेकिन आप बॉम्बे आके बात करो। हाँ, ओ अच्छा। नहीं देखो, ये अभी हम लोग तो हमारे MLAs के साथ है। MLAs के साथ हमारी चर्चा होगी, बैठक होगी, और जब भी जो भी आगे की स्टेप है वो हम लोग बैठक के बाद ही तय कर पाएंगे। अच्छा, तो शिंदे साहब पार्टी सिंबल पे भी बहुत चल रहा है, आप लोगों ने भी स्टेट क्लेम किया है कि जो शिवसेना का ओरिजिनल पार्टी सिंबल है, अब आप बोल रहे हैं रियल सैनिक आप हैं। नहीं, हम लोग तो बाला साहब के सैनिक है ही ना, हम लोग कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। हाँ, हम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के ही सैनिक है, उसमें तो कोई चेंज नहीं है। हम लोगों ने कोई पार्टी चेंज बनाई नहीं, पार्टी चेंज नहीं की। तो अब पार्टी ये अब ठाकरे से कंट्रोल में अब आके अब एकनाथ शिंदे कंट्रोल करेगा कल, क्योंकि आप चेयर पे जो बैठे थे बिल्कुल बाला साहेब के स्टाइल में बैठे थे, ऐसा लोगों का कहना था। वहाँ पे कौन बैठे थे? MLAs के सामने बैठे थे जब उन्होंने आपको अपना नेता चुना, तो बहुत लोगों का सोशल मीडिया पे ऐसा कहना था कि एकनाथ शिंदे जो बैठे हैं उनका हाव भाव बिल्कुल बाला साहेब ठाकरे जैसा है। अरे बाला साहब तो मेरे भगवान थे जी, हमारे लिए तो वो दैवत थे, और उनका मैं बहुत ही हमारे दिल में आदर सम्मान, क्योंकि हम लोग जो भी है उनके वजह से। तो ऐसे जो कहता है उनकी गलतफहमी है। हम लोग तो बाला साहब के चेयर पे उनके बैठ नहीं सकते, उनकी स्टाइल भी नहीं कर सकते, हमारी जगह तो उनके चरणों में। शिंदे साहब आपने कल ये भी कहा कि एक कोई शक्ति है जो हमारा ध्यान रखेगी, कोई डरने की बात नहीं है। कौन सी शक्ति के बारे में? वो बाला साहब ठाकरे जी की और हम हमारे धर्मवीर आनंदी के साहब की शक्ति है जी। और आप लोग बॉम्बे कब जाएंगे? क्योंकि लोग कह रहे हैं, कल शरद पवार साहब ने भी कहा कि अगर आना है तो यहाँ आके फ्लोर टेस्ट करो, गुवाहाटी से मत करो। वो सब हो जाएगा, फ्लोर टेस्ट, हम सभी चीजों के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे MLAs किसी भी धमकी से डरने वाले नहीं, और उन्होंने जो लिखा है डिस्क्वालिफिकेशन का, वो तो चेष्टा कर रहे हैं। उनको पता है कि इससे डरते हैं क्या देखते हैं, ऐसा कोई भी डरेगा, कोई भी MLA डरेगा नहीं। उन्होंने रात को भी हमारी बैठक हुई, सभी लोगों ने कहा है हम सभी परिणाम के लिए तैयार है। और ये महिला हमारी जो MLA है उनको क्या डराते हो डिस्क्वालिफिकेशन? वो महिलाएं बोले हम लोग तो दिल मन बना के आए, जो हमारे सुख दुख में शामिल होता है उनके साथ हम लोग है, उसके चाहे परिणाम कुछ भी हो। ये डराने से डरने वाले नहीं। हम तो MLA से जो सब 3-3, 4-4 लाख लोगों ने वोट किया है, वो वहां से वो चुन के आए, और रूल्स कानून और कॉन्स्टिट्यूशन हम जानते हैं। ये खाली एक हरकत है, चेष्टा है, इसे कोई डरने वाला नहीं। शिंदे साहब क्या आप कोर्ट भी जाएंगे इसके खिलाफ? अरे लेकिन अभी कोर्ट में जाने की जरूरत क्या है, वो तो आगे की बात है। कई जजमेंट्स है, खाली मीटिंग अटेंड नहीं की तो इसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन, ये तो दुनिया में पहली बार। ऐसे इतने के सामने वाले कितने डरे हुए हैं ये पता चल रहा है।
तो महाराष्ट्र में अब अगली सरकार कब तक देख सकते हैं लोग शिंदे तो साहब? देखिए, अभी हमारी बैठक होगी, हमारे जो विधायक है, उसके बाद में आगे जो भी है वो बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद। शिंदे साहब, एक लास्ट सवाल, आपके पास टोटल अभी MLAs कितने हैं? कल आपने फोटो भी रिलीज किया, वीडियो भी रिलीज किया। हमारे यहाँ पर आपको बताऊंगा कि लगभग 50 प्लस है। 50 प्लस है। उसमें से सेना की कितने हैं? सेना के 40 है। 40 है। ठीक है शिंदे साहब, टाइम्स नाउ से बात करने के लिए थैंक यू। So Eknath Shinde speaking exclusively 2 times now. And Pranesh in conversation with Eknath Shinde, where he is now claiming that there are around 50 of those MLAs, that includes the independents, with him in Guwahati in the hotel where they are currently camping, and there are around 40 of the Sena numbers that are just increasing now, because it is also being said last batch of the Sena MLAs flew down to Assam to Guwahati, there where Shinde camp is currently camping, and Aditya Thackeray is barely left with the less than 10 of the MLAs who have been left behind. What is also being said that not just the MLAs, the MPs too of the Shiv Sena are coming out in open support to Eknath Shinde. So those pictures that was released yesterday from the hotel there, and we've put a head count exactly how many people were said to be present. 42 of them are there. That includes both the Shiv Sainik MLAs and also from the independent camp. We are now told that there are more people who are being added to this, so there could be fresh pictures, a show of strength that could again be released by Eknath Shinde. But when speaking to Times Now on the issue of disqualification, he goes on to say that we are not scared. Just because 1 or 2 meetings have not been attended, they cannot disqualify us. He also refuted any of those charges that in a new political party that will be formed, he has said no, he has been, today is, and will always be a true Shiv Sainik and will continue the legacy of Balasaheb Thackeray. So he is now saying that we are the real Shiv Sainiks. This is being seconded by the other leaders of the Shiv Sena as well, who have now joined the Shinde camp. Even with the news that came in yesterday that the Aditya Thackeray Shiv Sena has now written to the Deputy Speaker asking for the dismissal, the disqualification of at least 12 of those legislators. That includes Eknath Shinde. Eknath Shinde has now countered that, saying that this is unconstitutional and it cannot be applicable, even as when it comes to more than 40 of the Shiv Sainiks who are currently camping in Guwahati. They have now chosen Eknath Shinde as the legislative party leader. We'll continue with all of those exclusive updates on the other side of a short break. Stay tuned.